Good morning, team. KEC has informed the order book and they are meeting investors tomorrow. So all RPG group company will be meeting investors. So I think that is something to watch out for. Kalyan Jewellers has been very aggressive. Previously, we updated that the interaction with Kalyan Jewellers, they said franchisee owned company operated model will be scaled up. So currently they are having about 12 stores like that, but it will be scaled up to 52 stores. But at current level, Kalyan Jewellers looks good for trading purposes for next 3 to 6 months. So one can look at Kalyan Jewellers. FEM Industries informed fire in one building of Unit 7 situated in plot number 1915, Phase 5 in Sonipat, Haryana. Slight negative, and many companies have shut down. Whoever is in the Gujarat coast, they have shut down, including Balakrishna Industries, and few other companies have given to exchange that few days, next 2-3 days, they will not do any operations. Zydus Life announced group injectable manufacturing facility at Zydus Biotech in Ahmedabad underwent a US FDA inspection from 5th June to 13th June, and inspection concluded with no observation, which is positive for Zydus Life. There are few stocks, which is looking very good, mainly in NBFC space. Many stocks are doing very good. In that, we like AB Capital, Mahindra Finance, PNB Housing, Canfin Homes. Now, we even like Sriram Transport Finance. So, these are few companies which are looking good. There are few expensive companies like Bajaj Finance and Poonawalla FinCorp, but we don't like that at this point of time. Valuation wise, these companies, L&T Finance, these are more comfortable. So these are companies we like. Other companies where we see some value is Infosys, AIA Engineering, Brigade, HEG, Graphite, Philip Carbon, then Tata Communication. These are few companies which will do very good. Tarai, telecom regulator has come with a direction saying that telecom companies should use artificial intelligence and ML to detect PEXI calls within next 30 days. So we get a lot of calls from unauthorized people. So they are saying you have to crack down that. And there are two companies which are in this business, Tanla and Root Mobile. But Tanla has taken over one company, Wisley ATP, about few days back, and they are in a better position. Yesterday, Tanla saw a rally. I think more rally is possible in Tanla Solutions. But we don't track the stock closely, but at least this news would have a positive impact on them. Dampur Sugar Mill has informed exchanges that it has completed grain-based distillery capacity of 100 kiloliter per day at its location at Dampur Distillery, Bijnor in UP, which is positive for Dampur. Mahindra CIE, we like this stock. It is a Sweden-based MNC. So Mahindra has exited. Now it has become CIE India in NSE, and the name of the company will be called as CIE Automotive India Limited. So this is something we like. The price. We started recommending around 350. Today it is 500. Still, we feel 700, 750 in over a period of time is still possible. Brigade Foundation to set up two not-for-profit hospital of 100 bed each at Brigade Meadows, Kanakapur Road, and Brigade EL in collaboration with John's Medical Hospital. So this is slightly positive, but we like Brigade, we like Prestige. Now we like DLF in real estate space. Real estate space, any dip, buy on dip is a better strategy. We like even Oberoi Realty, Kolte Patel. Now to add
Sajan Jinjal, chairman of JSW Group, he might acquire stake in MG Motor, but he is doing it through his privately owned company. So he will acquire almost 45 to 48%. As per government regulation, Chinese company cannot hold more than 49%. So in this, he might pick up the stake is what media is speculating. NLC India, joint venture Neyveli Uttarakhand Power inked the pact to supply 492 megawatt of electricity to Assam from its 1980 megawatt thermal power plant. The most debated trip of our Prime Minister to US, there are many deals which can be signed, and it is going to be very positive for India. India has achieved $3.75 trillion over a period of time we have achieved, but in the last few years we have grown very fast. Now, once the base is created, normally the growth is always faster. We have seen in three countries which have gone from $2 trillion to $5 trillion, namely Japan, US, and China. China growth has been the fastest because they are not a democratic country. They were able to grow faster than us, but democratic country takes its own sweet time to achieve that, but that is okay. But we are in the right path, and I think we will do very good. So we feel this is going to be a decade of India, golden decade of India. So many stocks are likely to outperform, and inflation in US has also come down, which is very positive for our market. So interest rate hike, or a pause in US is something we expect there. If that happens, it is very positive here. MRF hits 1 lakh. This is the first Indian stock to hit 1 lakh price range. So but we need to understand MRF has never given a bonus, whatever I can recollect in last 23 years. Now, before that, I have not sent the record, but at least in 23 years, there has never been a bonus or never been a stock split. Previously, it was 100 paid up stock, then they made it 10. I think in 90s they made it, after which they never did any tinkering. And even in dividend payout, they don't pay more than 10% of their net profit as dividend. And the stock trades very expensive, around 54 times. Compared to any tire stock which trades around 20. So I'm not very comfortable with MRF on valuation basis. Price never interests me. It is only valuation I look at. JK Lakshmi Cement plans to invest 8,000 crore to up its capacity over the next 6 years. So be stock specific. There are many stocks which will be very good. Over to you, team. Thank you, sir, and good morning, everyone. इस कॉल को एक बार हिंदी में पहले स्टार्ट करते हैं। केईसी को ऑर्डर बुक देख रहे हैं और उनकी ऑर्डर बुक भी बढ़िया, इन्वेस्टर मीट आरपीजी ग्रुप की मीट है, तो केईसी वहाँ थोड़ी हलचल दिख सकती है। सेकंड कल्याण ज्वेलर्स में हमने बात की, तो उनकी जो मूव दिख रही फ्रेंचाइजी जो मॉडल है वो उसे और स्केल अप करना चाहेंगे और आगे से भी बढ़ाना चाहेंगे। 12 स्टोर्स है, करंटली 52 स्टोर्स तक लेके जा सकते हैं। किसी भी अगर किसी को ट्रेडिंग रेट आउट करना है तो अगले 5 से 6 मंथ ये स्टॉक पे फोकस रखनी है। सेम इंडस्ट्रीज में देखा गया तो सोनीपत के हरियाणा प्लांट में फायर हुआ है, तो उससे भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। नेक्स्ट गुजरात कोस्ट की जितनी भी कंपनीज है, जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हो गई, उन्होंने अपने प्लांट को 4 से 5 दिन के लिए बंद किया जो आते हैं साइक्लोन के चलते हुए। वायरस लाइफ में भी कहा कि जो ग्रुप इंजेक्टेबल्स है वो उसमें वो उनकी एक ग्रुप कंपनी की तरह डेवलप कर रहे हैं, और उनके यहाँ भी यूएसएफडी इंस्पेक्शन था, तो उन्होंने कहा कि वो जीरो ऑब्जर्वेशन के साथ निकले हैं। अगर एनबीएफसी हम देख रहे हैं तो एनबीएफसी स्टॉक्स हमें अच्छा लग रहा है। उसमें एबी कैपिटल हो गया, एमएनएम फाइनेंस हो गया, कैपिटल होम हो गया, उपयोगिता हाउसिंग फाइनेंस हो गया, श्रीराम हो गया, एलएनडी फाइनेंस स्टॉक से फोकस करना चाहिए। बट बजाज फाइनेंस को ओवरऑल स्टॉक्स भी अच्छे हैं, बट अभी वैल्यूएशन वाइज थोड़े रिच लग रहे हैं, तो ये थोड़े से करेक्ट होने पे ध्यान रखना चाहिए। बाकी वैल्यूएशन वाइज भी जो हमने बताया पहले वो स्टॉक। इसी में अगर आगे लाइन चले तो इन्फोसिस हो गया, एआई इंजीनियरिंग हो गया, ब्रिगेड एंटरप्राइज हो गया, एचईजी हो गया, ग्राफाइट हो गया, ईसीबीएल हो गया, टाटा कम्युनिकेशन के स्टॉक्स हो गया। फोकस रखिए स्टॉक्स, वैल्यूएशन वाइज भी थोड़े अच्छे रेस्पॉन्स में मिलता है।
एआरआई का डेटा भी देखा था, एआरआई ने कहा कि हम सारी कंपनीज को कहा गया कि एआई एमएल को यूज करके जो भी फेक कॉल्स या स्पैम कॉल्स आते हैं वो इमीडिएटली स्टॉप करना चाहिए। इस सेक्टर में देखा जाए तो ये दो कंपनी है, जैसे तानला एंड रूट मोबाइल। तानला सोल्यूशन का हमने देखा ऑलमोस्ट 20% के आसपास की रैली देखी गई, क्योंकि इंडिया और नेशनल नाम की कंपनी जो कि यही काम करती है। तो तानला हमें लगता है बेटर प्लेस है सेकेंड और रूट मोबाइल से। रामपुर शुगर ने कहा कि उनकी जो बेन बिस्लरी है 100 किलोमीटर के फासले की वो स्टार्ट हो गई बिजनौर में। महिंद्रा सीआई ने कहा कि महिंद्रा सीआई से अभी वो सीआई ऑटोमेटिक हो जाएगी एनएससी में। करेंटली देख रहे हैं हम 350 स्टॉक पोजीशन 500 का लेवल टच हो गया। हमें लगता है यहाँ से और आगे भी पॉसिबिलिटी अपसाइड दिखती है। ब्रिगेड ने कहा कि उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटल डेवलप किया कोलैबोरेशन जॉन मेडिसिन के साथ, और मेडिसिन के साथ भी डेवलप करेंगे। अगर हम रियलिटी स्पेस में देख करें, रियलिटी स्पेस में देखेंगे तो जैसे ब्रिगेड हो गया, प्रेस्टीज हो गया, डीएलएफ हो गया, ओपेरा रियलिटी हो गया, कोल्टी पाटिल जैसे स्टॉक्स को हमें फोकस करना चाहिए। सचिन वेंदर ने कहा कि वीक एक्विजिशन करना चाहते हैं एमजी मोटर्स में, देखिए 45 से 48% के आसपास तक का एक्विजिशन करेंगे। साइड मोटर्स के आसपास का साइड मोटर्स के पास बेसिकली ये पूरी स्टेक है जो चाइनीज कंपनी है। सो इसमें से गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें अपना स्टेक रिड्यूस करके बिलो 50% लाना है, और सचिन वेंदर जी अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट से ये करेंगे। गेम की जो डिबेट है था वो यूएस के लिए जाने वाले, तो हमें लगता है बहुत सारी गेम साइड होने वाली है, और बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टीवी से देखकर ये सब फोकस कर रह सकता है। करंट हम देख रहे थे हमारी इकोनॉमी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के लिए, हम देख रहे थे हमारी ग्रोथ अच्छी है। पिछले कुछ सालों में देखा ग्रोथ और अच्छी हुई। 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन डॉलर्स में देख रहे जो फास्टेस्ट ग्रोथ में जापान, यूएस और चाइना। चाइना सबसे तेज ग्रोथ है। बेसिकली चाइना जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, तो डेमोक्रेटिक के लिए ग्रोथ ओवरऑल हमें लग रहा है ग्रोथ वही अच्छी चलनी चाहिए। यूएस सीपीआई भी हम देख रहे हैं फुल ऑफ 5.1% के आसपास है, हमारी इंडियन सीपीआई भी नियर अबाउट 4.2%। सो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी अगर इकोनॉमिक के लिए देख रहे तो अच्छा है। और हमें लगता है कि फ्रेड आगे नेक्स्ट में रेट हाइक तो नहीं करना चाहिए, या पॉज की तरफ थोड़ी उनकी अंदेशा होनी चाहिए। एमआरएफ के टायर्स में देखे जाए तो 1 लाख का प्राइस टच करके सबसे कॉस्टली स्टॉक होगा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे। 1 लाख का प्राइस टच करने वाला वैल्यूएशन में देखें तो बहुत ही रिचली वैल्यू का 54x का वैल्यूएशन दिख रहा है, और बाकी टायर्स के जो कि 20 से 25 के आसपास में चल रहे हैं। इसमें मेरे को लगता है, हमें लगता है अपने 3 साल में आज तक कोई बोनस या स्प्लिट तो दिया नहीं गया, उसके पहले एक दिया गया है या है। तो इसी स्पेस में हमें टायर स्टॉक्स में जो कि रिचली वैल्यूएशन की जैसे फुल टायर वो सब स्टॉक्स को फोकस रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि वो 8,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स करेंगे अपने कंपनी एक्सपेंशन के लिए। मारुति सुजुकी अपनी कंपनी में देखिए यार इन्वेक्टो जो कि बेसिकली टोयोटा हाइक्रॉस और टोयोटा बिट्स की मॉडल पे रहेगी, और बेसिकली ये फर्स्ट कार रहेगी जो 8 से 20 लाख के आसपास की रहेगी, और ये कम्पीट करेगी इनोवा के साथ, एमजी हेक्टर प्लस, टाटा सफारी, महिंद्रा एक्स700, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड के लिए। ये मारुति सर दो एमपीवीज बेच रही है करेंटली, अर्टिगा एंड एक्सेल 6। तो 20 लाख सेगमेंट में फर्स्ट कार इनकी रहेगी, और इनको लगता है 3 लाख यूनिट्स के आसपास की वो सेल्स कर सकते हैं। एंटाइम एंट्री ने कहा कि उन्होंने एक ज्वाइन किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सीलेंस एजेंसी, जो कि इकोसिस्टम है इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ, और मैनेज सिक्योरिटी कर रहे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए। और ये कंपनी एनहांस करेगी एमडीआर प्लेटफॉर्म और एंटरप्राइज प्रिवेंट करेंगे डिटेक्ट और रिस्पॉन्सिबल जो भी साइबर अटैक्स के लिए रहेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की भी क्रूड स्टील डेटा देखेगा भी उन्होंने 2.2 मिलियन टन रीच किया, जो कि 7% इंक्रीमेंट दिख रही है 2 मिलियन टन से। इंडियन ऑपरेशन देख रहे हैं 2.093, जो कि 6% की ग्रोथ दिख रही है 2 मिलियन टन से। अनुपम रसायन ने कहा कि उन्हें उन्हें कस्टम सिंथेसिस और केमिकल प्लेयर है। उन्होंने एक लेटर ऑफ इंटेंट वर्क्स 2186 करोड़ का अगले 5 साल के लिए मिला है लीडिंग जापानीज स्पेशलिटी केमिकल से, जो कि सप्लाई करेगी न्यू एज पेटेंटेड लाइफ एक्टिव इंग्रेडिएंट के लिए। नेक्स्ट न्यूज है क्यूमेंस इंडिया को। क्यूमेंस इंडिया को एक रिसीव मिला है सीपीसीबी, जो कि कम्प्लाइंस सर्टिफिकेशन है ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन एआरआई से, और ये ट्रांजेक्शन रहेगा सीपीसीबी 4 से जेनसेट नॉमिनेशंस के लिए, जो कि लॉन्च करेंगे टेक्नोलॉजी का एडवांस और कंप्लायंट रखने के लिए। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहेगी टुवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली और नेक्स्ट जनरेशन पावर सॉल्यूशंस के लिए इस इंडस्ट्रियल प्लांट के लिए। एसी इंटरनेशनल को भी नए ऑर्डर्स मिला है 1373 करोड़ का अक्रॉस इनके वेरियस वर्टिकल बिजनेस के लिए, और स्पेशली रेलवेज में रहेंगे। ये गवर्नमेंट के फोकस के साथ है कि स्पीड एंड सेफ्टी इंडियन रेलवे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, और इमरजेंसी सेगमेंट में एबीएस जो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल है उसको इंक्रीज कैपेसिटी डी करने के लिए ऑटोमेशन की तरफ उनके सिविल बिजनेसेस के लिए जो ग्रोथ पैकेज दिख रही है वो लगता है हमें रखने की जरूरत है।
रिपीट ऑर्डर जो है वो टी&डी में जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट डेवलपर्स है जो रीफंड कर रही ग्रुप इंडिया टी&डी बिजनेस में, और बेसिकली नॉर्थ अमेरिका से भी ट्रैवल और सप्लाई ऑटो सब्सक्राइब करते हैं. Derivative and technical update. On the technical front, if we see, so Nifty sustained its bullish momentum throughout the day and ended on a positive note yesterday. On the daily chart, index has taken support near 10 EMA levels around 18,569 and then witness a bounce from the lower levels. So if we see on the daily chart, Nifty is forming a higher top, higher bottom formation, which suggests the continuation of the rally. Now 18,400 should act as a crucial support for the index, while resistance can be expected to 18,800 levels. On the broader market, if we see the broader market indices rise more than a Nifty, overall mid-cap index performed better. Bank Nifty continued struggle around 44,000 to 44,200 levels. So yesterday index was trading in a range throughout the day. But last some momentum towards the end of the day and close on a positive note. The index continued to trade within a broader range of 43,500 to 44,500 levels last few weeks. So 43,000 will act as a support and 44,500 will act as a resistance. And if we see on the derivative data, so 44,000 strike witnessed the highest OI in the terms of both call buying as well as a put writing. So which indicate the immediate support, and overall bias remains bullish for the both the index, and we will follow the buy on decline strategy. Then if we see on the FI data, FI added a longs around 6,388 and net long by 4,289, and ratio long short ratio is a 51.40%. Then cash segment FII added a 1,677.60 crore and DI sold 203.32 crore. If we see on the long build-up witness in a Tata, Com and Dixon, and short build-up witness in Indigo, Concor and AB Capital. On derivative data front, Nifty future OI saw a short covering of around minus 0.75%, which is a reduction of 0.07 million shares. And now total outstanding position currently at 10.28 million shares. Nifty PCR saw yesterday uptick, which is closed at 1.1. If we see on the previous closing, so previous closing was 0.92. On the Nifty, major addition happened in call option front at 18,900 and 18,700 strikes. And put option front, major addition were seen in 18,700 and 18,600 strikes. Bank Nifty front, Bank Nifty PCR saw uptick and closed at 0.87. And Bank Nifty future OI indicates that there was a long build-up seen in the index. Addition in OI by 0.87, that is 0.03 million shares. If you see on the Bank Nifty front, so major addition happened in a call option front, 44,000 strike. Addition in OI to the tune of 35.73 million shares. While on the put option front, major addition were seen in same 44,000 strikes. Addition more than 42.83 million shares. So that's it from my end. Now I will hand over to research team, Bhavesh sir. Thank you, and over to you, sir. Yeah, hi. So, good morning, team. First, starting with Maruti of Suzuki. So, Maruti has launched a multi-purpose. Is set to launch a multi-purpose vehicle in Victo next month. So, which will compete with likes of MG Hector Plus, Tata Safari, and Mahindra XUV 700. And this will be below 20 lakhs. So, there is another competition that is coming in. Positive for Maruti. Second on LTI, so LTI Mindtree has joined Microsoft Intelligence Security Association, which is an ecosystem of independent software vendors, and this will help it to respond to cyber attacks. So it is positive. Then on JSW Steel, so JSW Steel reported crude steel production growth of 7% in May to 2.2 million ton, which is quite like in line with expectations. Then Anupam Rasayan has signed an letter of intent of revenue worth nearly 2,200 crores over a period of 5 years with a leading Japanese specialty chemical company. So this is very positive for them. Then Cummins India has received various CPC B4 certifications from Automotive Research Association of India. So
So this more than this more than advanced technology. So this is very positive from a longer term perspective. Then on KEC International, so KEC has received an order over nearly 1400 crores from various businesses, and especially from railways. So very positive, that adds to this capital goods, where there has been a lot of increase in order book in the last few months. So that's it from me. Over to you, the retail team. Thank you, Bhavesh sir. So a few more research news updates from my end. So the Balkrishna Industries, the company has said it will suspend operations at the Bhuj plant from the late evening of June 13, 2023 due to the cyclone which is there. So it will be halted operation for the next 3 to 4 days is what the update is. Kotak Mahindra Bank is likely to meet on June 16 to consider to raise the funds by issuing non-convertible debentures or bonds in one or two more tranches on a private placement basis during the financial year 23-24. So another is on GAIL. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has nominated Executive Director Marketing Sanjay Kumar as a director on the board of the company. Presently, he is the managing director of the IGL, one of the largest CNG distribution company in India. LIC Housing Finance, the company's chief operating officer and the whole-time director, Ashwani Ghai, has resigned with effect from the June 13. Another one is Zomato. The company's unit Zomato Australian Pty Limited has been deregistered with the effect from 11 June 2023. Lastly, on Tata Chemical, Tata Chemical also follows the Nirma with the downward revision in the soda ash prices by rupees 2,300 per ton. So that was the news update.